Chapter number 3, circles. So now we have studied about most of the theorems. Now we are going to go into a circle and segment and minor and major arc. So let me explain you that what is an arc and a sector and etc. This is a circle with center O. Look this carefully, how I am drawing the figure. POQ is a sector. I am talking about. Okay. Now this concept can be used in this chapter. This concept can be used in mensuration, that is the last chapter also. This arc here. See, what is an arc? Arc is a part of a circle, part of a circumference. Okay? So I can say PQ, arc PQ is part of arc PQ. I call it minor arc. Minor arc PQ is a part of circumference. Major arc, this is minor arc. From here to here, this is major arc. Is also a part of circumference. Okay? Now I am going to write here theta. This is angle theta. Theta is any major. Theta is a Greek alphabet. And it is any angle. Okay? So, measure of circle is 360 degrees. Measure of semicircle 180 degrees. This you know, measure of a circle is 360, measure of a semicircle is 180. What is measure of minor arc? Measure of minor arc PQ is measure angle POQ, that is theta, where angle POQ is central angle. आप मुझे बोलोगे सर ये क्या आपने क्या एक्सप्लेन किया ये? See, this if I want to measure मतलब ये भी measure of an arc, जैसे measure of a circle is 360 डिग्रीज में होता है, measure of a semicircle 180 ये भी डिग्रीज में होता है. तो measure of a minor arc has to be less than 180. So it will be suppose theta and that will be equal to measure of a central angle. ये central angle है. Angle whose vertex lies on the center is called central angle and it intercepts, वो hold करता है, गले लगाता है minor arc को. And measure of
major arc will be, say PRQ यहाँ in this case, will be 360 degrees minus measure of arc PQ. मतलब measure arc is equal to 360 degrees minus measure of minor, याद रखो, अभी सेक्टर देखते हैं. ये है सेक्टर, माइनर sector. Sector is a part of a circle, not circumference. Sector, minor sector रहते हैं. Minor and major sector are part of circle. That is minor sector, ये O dash PQ is a minor sector. And major sector is O dash PRQ. Okay. इतना याद रखो. We erase this and we now go to theorem. क्या theorem है देखो. The chord of a corresponding, the chords corresponding to congruent arcs of a circle are congruent. Chords corresponding to congruent arcs of the circle. Okay. We'll prove both the theorems simultaneously. मैं simultaneously अलग अलग करेंगे एक के बाद एक. They say chords corresponding to congruent minor arcs. तो समझो ये एक chord है और दूसरा ये chord है. ये आपका कंस्ट्रक्शन है. Property of नहीं, इसको कॉर्ड्स, ये पूरा थियरम लिखना ही पड़ेगा. स्टेटमेंट chords, the chords corresponding to the chords, okay, the chords
the chords corresponding to congruent minor arcs are congruent to congruent arcs to the chords corresponding to congruent arcs of the circle are ये ARE है ARE are congruent. गिवन देखो a circle with center O, arc AB congruent arc CD, ये arc congruent है. To prove chord AB congruent chord CD. Construction क्या है? We have to draw this radii. Draw sec OA, sec OB, sec OC and sec OD. Now we go to proof. ये बहुत आसान proof है. We take these two. अच्छा, they already given us first arc AB congruent arc CD. Arc AB is congruent to arc CD. This is given. Statement number 2. Therefore, angle AOB congruent to angle COD. देखो आर्क अगर कॉन्ग्रेंट है, माइनर आर्क कॉन्ग्रेंट है, तो आर्क कॉरस्पॉन्डिंग टू एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू माइनर आर्क से कॉन्ग्रेंट. मतलब ये आर्क कॉन्ग्रेंट है, तो ये जो एंगल है, दो एंगल, ये सेंट्रल एंगल है, कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस टू आर्क्स विल बी कॉन्ग्रेंट. तो ये कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे. तो लिखना पड़ेगा central angles holding central angle holding corresponding करो ना. central angle holding बराबर holding congruent minor arcs are R A R E R congruent. Third, therefore in triangle AOB and triangle COD, AO sec AO congruent sec CO, radii of same circle. Fourth, angle AOB congruent angle COD from statement number 2. Fifth, sec BO congruent sec DO again
radii of same circle 6. Therefore triangle AOB congruent triangle COD by side angle side test. Last statement, therefore chord AB congruent chord CD corresponding sides of congruent. देखो I repeat this theorem. उन्होंने क्या कहा है? Chords, ये chords है, देखो chord AB and chord CD. Chords corresponding to congruent minor arcs. ये arc जो है arc AB and arc CD are minor arcs and they are congruent. If these minor arcs are congruent, then we have to prove that this chord AB congruent to chord CD. यहाँ क्या है? अपना कंस्ट्रक्शन है join AO, join BO, join CO and join DO. They are all radii of the same circle. So पहले स्टार्ट करेंगे जो दिया है उन्होंने given arc AB congruent to arc CD. This is given. If these two arcs are congruent, then the corresponding central angles also congruent. लिखना पड़ेगा central angles holding congruent minor arcs are congruent. ये तो एंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो या तो ये सब चारों साइड्स इक्वल है बिकॉज रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. तो स्टार्ट करो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD. AO कॉन्ग्रुएंट टू CO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD फ्रॉम सेगमेंट नंबर 2. सेगमेंट BO कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट DO, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल. देयरफॉर दिस टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय साइड एंगल साइड टेस्ट, SAS टेस्ट, SAS test, SAS test. Therefore, chord AB congruent to chord CD, corresponding sides of congruent triangles. अभी next figure जो है वो है congruent arcs of congruent chords of a circle are congruent. इसका converse corresponding arcs of congruent chords. फिगर सेम ही होगा, बस इस बार क्या दिया है, इस बार उन्होंने एक कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिया है. हम रिवर्स जाएंगे. कॉर्ड कॉन्ग्रुएंट दिया है और ये जो रेडियस है वो सब कॉन्ग्रुएंट. सो दिस टू ट्राइंगल्स यू नो वेरी वेल. साइड टेस्ट से प्रूव हो जाएगा. वंस यू प्रूव दैट वी शो दिस सेंट्रल एंगल से कॉन्ग्रुएंट, और सेंट्रल एंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो माइनर आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा. स्टार्ट करते हैं. गिवन में a circle with center O, chord AB congruent chord CD दिया हुआ है. To prove arc AB congruent arc CD, ये प्रूव करना है. कंस्ट्रक्शन सेम एज दिस, सब ज्वाइन करना है आपको. रेडियस ड्रॉ सिग AO, सिग BO, सिग CO एंड सिग DO. प्रूफ चालू करते हैं.
थोड़ा इंक भी भरते हैं। डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें कुछ ये बाद में आएगा, लास्ट में आएगा, तो ये रिवर्स जाना है हमें, तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD chord AB congruent chord CD given. Statement number 2, sec AO congruent sec CO. AO congruent CO. Statement number 3, sec BO congruent sec DO. ये दोनों combined रीजन radii of same circle. Fourth, therefore triangle AOB congruent triangle COD by SSS test. क्योंकि ये triangles congruent है, these two angles will be congruent. Therefore, angle AOB congruent to angle COD. Corresponding angles of congruent 6. Therefore, arc AB congruent arc CD. Arc minor arcs, or central definition of if central angles are congruent, then their minor arcs, central angles holding congruent minor arcs are congruent minor arcs. How we'll use the word? Definition of central angle तो नहीं, measure of a congruent arcs. If central angles are congruent, then their corresponding minor arcs are ये central angle congruent, so this corresponding minor arcs also will be congruent. Hence proved. Hence proved. अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। थ्री पॉइंट थ्री पे जाते हैं।
दिस ऑल्सो थियरम्स, ये दो थियरम वापस एग्जाम में नहीं आएंगे. दिस थियरम वोंट कम इन एग्जाम. उसके स्टेटमेंट्स ही याद रखो, उसके स्टेटमेंट्स बहुत जरूरी है. स्टेटमेंट्स ही आएंगे एग्जाम में. मतलब एप्लीकेशन होगा और वो एप्लीकेशन जो हम लोग अप्लाई करेंगे वहां लिखना पड़ेगा अपने को. प्रैक्टिस सेट 3.3. क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या है. उन्होंने फिगर दिया हुआ. कीप ऑलवेज कीप अ टेक्स्ट बुक विथ यू, तो अच्छा पड़ता है. दो क्वेश्चन एक साथ लिख लेते हैं. DEFG, ये DEF somewhere G यहाँ है. अच्छा, what is meant by concyclic? When याद रखो, if points lie on the circle, points lie on all these points, the DEFG lie on the circle, so these points are called concyclic. हम next theorem करने वाले इसके बाद. एंगल ECF, ये C है सेंटर, ये 70 है. मेजर आर्क DGF, ये 200 है. You to find measure arc DE and measure arc TEF, ये दो हमें फाइंड करना है. देखो DGF, ये जो आर्क है ये मेजर आर्क है, मतलब मोर देन 180. उसका मेजरमेंट दिया हुआ है 200. ये सेंट्रल एंगल ECF इज अ सेंट्रल एंगल, उसका एंगल मेजरमेंट कितना है 70. सो ये माइनर आर्क जो है ना, ये भी 70 हो जाएगा. अब यू नो मेजर ऑफ अ सर्कल इज 360. मेजर ऑफ अ सर्कल कितना है 360, तो 360 में से 270 माइनस करो तो 90 डिग्री आ जाएगा. ये 90 है और ये ऐड करोगे तो ये 160 है. यही हमने जो अभी मैंने बताया सॉल्व करेंगे. सॉल्यूशन पहला, मेजर आर्क DGF इक्वल टू 200 डिग्रीज. ये है गिवन. सेगमेंट नंबर 2, मेजर आर्क EF is equal to measure angle ECF equal to 70 degrees. Definition of central angle and corresponding minor arc. Statement number 3, इसका मतलब ये 70 हो जाएगा. Now measure arc DE plus measure arc EF plus measure arc DGF, ये 360 डिग्री है. उसका रीजन क्या है,
measure of circle is 360 degrees. ये सब मिला के measure of circle होता है arc. Therefore measure arc क्या चाहिए अपने को? DE is what we want plus ये 70 degrees plus 200 degrees equal to 360 degrees. Therefore measure arc DE equal to 360 degrees minus 270 degrees. Therefore measure arc DE equal to 90 degrees. अभी स्टेटमेंट नंबर 4 DEF चाहिए. Measure arc DEF is nothing but measure arc DE plus measure arc EF. ये है arc addition proper. We can add and subtract arcs. So this will be 90 degrees plus 70 degrees. So measure arc DEF equal to 160 degrees. ये हो गया आपका आंसर. Now we go to question number 2. QRS is a triangle whose all the 3 vertices lies on the circle, and it is an equilateral triangle. Given triangle QRS is equilateral. Find पहला है आर्क प्रूव करना है. आर्क RS congruent to arc QS congruent to arc QR. प्रूव करना. सेकेंड प्रूव करना है मेजर आर्क QRS. ये पूरा दिस यू हैव टू फाइंड. नो यहां प्रूव करना है. यू हैव टू प्रूव दिस इज इक्वल टू 240 degrees. ये सब एंगल थ्योरम प्रॉपर्टी है. So here we have in question number 2, quadrilateral QRS is a equilateral triangle. Equilateral triangle means all sides are equal. All these sides are equal.
Then we have to show arc RS congruent to arc QS, congruent to arc QR. Once you get that, we have to show that this major arc QRS is equal to 240. So let's start solution. Well, quadrilateral QRS is, triangle QRS is equilateral triangle. This is given. If triangle QR is equilateral, then each angle is we don't have to, because the inscribe angle theorem we can't use here. Okay. So statement number 2, therefore chord RS, RS लेना ना, chord RS congruent chord RS congruent chord QS congruent chord QR. The reason is sides of equilateral triangle are congruent. Sides of equilateral triangle are congruent. All these three chords, all the three chords form side of an equilateral triangle. Therefore, arc RS congruent arc QS congruent arc QR. Reason, minor arc corresponding to congruent chords are congruent. Minor arcs corresponding to congruent chords are. We did this theorem just before this practice set. Therefore, we can say since R, पहला पाठ हो गया prove. Since arcs are congruent, so the measures are equal. Statement number 4. Therefore, measure arc RS equal to measure arc QS equal to measure arc QR. Reason, congruent arcs are equal in measures. Congruent arcs are equal in measures. Statement number abhi 5. Look, add all these three arcs. Measure arc RS plus measure arc QS plus measure arc QR, make a circle, that is 360. अच्छा, इसको हम लोग x डिग्री लेते हैं, ये से है, सेम इज सपोजिशन. सो मेजर आर्क RS equal to measure arc QS equal to measure arc, sorry, not equal to, plus QR equal to 360 degrees. Measure of circle is 360 degrees. Therefore, x degrees plus x degrees plus x degrees 360 degrees. Therefore, 3 times x degrees is equal to 360. Therefore, x degrees equal to 120 degrees. Therefore, we can say all arcs
major arc RS equal to major arc QS equal to major arc QR equal to 120 degrees. सब 120 डिग्रीज हैं. लास्ट पार्ट इसको इरेज करता हूं. Statement number 6. Therefore, we have to find this measure arc QRS equal to measure arc QRS is equal to measure arc QR plus measure arc RS. Measure arc QR plus measure arc RS. इसका रीजन है arc addition property. Therefore, measure arc QRS equal to 120 degrees plus 120 degrees from statement 5. Therefore, measure arc QRS 240 degrees. Now we have to go with next question. Next question पे जाते हैं. I will erase this. क्वेश्चन 3 देखो. Proof. Statement number 1. They are given us in circle chord AB congruent to chord CD. So वही लिखो पहले. Chord AB congruent chord CD. This is given. So what will be next? If chords are congruent, then the corresponding minor arcs will be congruent. Therefore, arc AB congruent arc CD. Reason? Arcs corresponding to congruent. So write minor arcs. Minor arcs corresponding to
congruent chords are congruent. Statement number 3. What is arc AB? Is measure arc AC plus measure arc BC equal to, यहाँ क्या होगा? What is CD? Measure arc BC plus measure arc BD. Arc addition property. Fourth, therefore measure arc AC equal to measure arc BD. Subtracting measure arc BC from both sides, that is arc AC congruent arc BD. Hence, we complete 3 point